Yeah, it's a continuous box. Yeah, and every element will be represented with can be accessed using an index. 1, 2, 3, 4. Array index always starts with 0. A is a array name here. Yes, up to size of element, that is 50. If the array size is 50, so index will be from 0 to 49. Yeah, 0 to 49. Okay, so this is what array is. Here A is an array of type int, so I can store only integer variables here. I can't store a character variable in this array because uska type int hai. Yes, so this is the basic thing in array. So if I define character array, yes, character array, here see, here the size is 10. I can store 10 elements. Index will be from 0 to 9. Yes, and in this array I can store character variables. Yes, so this is basic concept of array. I think आपका practicals हो गया, so you will need theory teaching. So सर एक बार फिर से बताओ ना character array. Yes, see, int array is an array of integers. जैसे मैंने बोला कि if I want to store roll number of 50 students, instead of writing 50, instead of declaring and initializing and storing, yes, 50 roll numbers in 50 different variables x, y, z, ऐसे करते हैं हम लोग, variable declare करते हैं, initialize करते हैं. Yes, so instead of using different variables for different student to store its roll number, we will be using array here, array of 50 elements in which I will be storing the roll numbers of student. Yes, and each suppose I want to access. See, suppose I want to suppose I have stored the roll numbers of student like this. Yes, this roll number starts from 1. Yeah, okay. So if I want to access a particular roll number, yes, so how I will be accessing this? C out क्या लिखते हैं हम लोग? प्रिंट करने के लिए C out लिखते हैं. Yes, C out and A of स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है, जो भी इंडेक्स आपको, जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर एक्सेस करना है, अकॉर्डिंगली यू विल बी यूजिंग इंडेक्स. सपोज आई वांट टू एक्सेस रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स 4, तो आई विल राइट 4 हियर. तो इट आउटपुट क्या होगा? 5. Yes, so this is the basic concept of array. Yeah, and similarly this is a character array. जैसे यहाँ पे इंटीजर स्टोर कर रहे थे array के अंदर, we will be storing, yes, character variables here, alphabets simply. Yes, yes sir. A B C, suppose आपको grade store करना है students का, so you can use this character. Index will be from C. There are, the size of array is 10 here. I'm giving the size of array is 10. So index will be from 0 to 9. Yeah, so you can initialize the array in this way. Okay, see, this is an integer array. Suppose you want to initialize this, so how will you going to initialize it? Instead of, you can take in as input from the user. So array element input कैसे लेते हैं? So you will be using C in, yes, and giving the index number like this here. C in, suppose मुझे index number let's say 10 पे कुछ input लेना है, यहाँ पे मुझे element store करना है in array A. तो how will editing कैसे लिखूंगा? यहाँ पे C in A of, yes, 10. So this is how I will be taking the input from user at index number 10 of array A. I hope array is clear to all. सर एक एग्जांपल दो ना.
yes, हम लोग कंपाइलर पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं. ओके, suppose is an array of 5 elements. Yes, जैसे मैंने बोला if I want to initialize an array, ऐसे initialize करते हैं 1 2 3 4 5. I'm storing 5 elements in this array. See, उसका size is 5. Element 1, this element is stored at index 0. मैंने बोला array index starts from 0, so last index will be 4 because size of array is 5. Yes, size of array is n, means n elements we can store in that array, and index will be from 0 to n minus 1. N minus 1 is the index of last element. This is how it is. Okay, suppose I want to access the array element. I want to print the array element. Suppose I want to print element present at index, let's say 2. If I want to print the element present at index 2, I will write a of, yes, index number 2 पे क्या present है? 3 present है, 0 1 2. Yes, so this is how I will be printing. Yes, element present at index number 2 is 3. Yes, 0 1 2. I hope it's clear to all. Let me show how to take input from user. Suppose मैंने initialize नहीं किया, I want to take input from user, so I will be using scene function. Yes, suppose I want to take input at 0th index, first element input लेना from user, so I will be saying yes, using cout. पहले मुझे बोलना पड़ेगा enter first element. We'll be using loops to take input. Yes, loops में we will be setting I from 0 to n minus 1 as index of array, and we'll write scene function inside loop to take in all elements as input. अभी मैं एक के लिए बता रहा हूँ. Yes, what happened? Yes, here we wrote scene. Now ये सिर्फ एक एलिमेंट लेने के लिए बता रहा हूँ. What happened to this? Okay, let's take all the elements instead. जैसे मैंने बोला, if I have 5 elements, size of array is 5 elements, so I will be setting I equal to 0. I will be less than equal to n minus 1, that is 4. See, size of array is 5. I should go from 0 to 4 and I plus plus. ये basic syntax सबको पता है in for loop. I will be using scene function. Yes, cool. Yes, sure now. Yes, if I want to enter 5 elements, input लिया. अभी suppose out of this I want to print yes, element present at index, let's say 4. Last element क्या है मुझे check करना है. So again, let me run the code. Suppose first element. See, this
I give 5 elements as input to this array. Now I am asking the element present at index number 4. So it will give me 18. Text change nahi kiya. So yeah. I hope basic array का concept is clear to all. Array में कुछ doubt है, you can ask me. Yes. Okay, let's move forward. So this is an array. Next is pointer. Pointer is a variable used to store address of other variable. Used to store address of other variables. So as it means, as a definition, suppose see, first of all देख लो कि pointer variable को declare कैसे करते हैं, syntax क्या है. First of all, we'll see the syntax, how to declare and initialize pointer variable. Syntax. So syntax is you will be writing star. Yeah, normal variable में we don't write star. Here in pointer we will be writing star. जो multiplication के लिए use करते हैं, same operator. Yes. Then pointer variable name. Yeah, it can be anything. Let's say p. So this is how I declare pointer variables. भी होता क्या है pointer variable? So definition लिखा हमने, variable used to store address of other variables. जैसे normal variables में we store data. If it's an integer variable, I will be storing an integer. If x is an integer variable, I will be storing, yes, any integer number. Yes. If it's a character variable, I will be storing a character inside that variable, right? But if it's a pointer variable, I will be using this variable to store address of other variable. But suppose if I have integer variable, example के साथ समझते हैं. If I have integer variable, let's say x. Yes, उसमें 5 already stored है. इसका डिब्बा कैसा दिखेगा? Yes, इसका मेमोरी के अंदर, yes, this is the डिब्बा for x. Yes, उसके अंदर 5 stored है. This is the value stored inside variable x, which is an integer number. We can only store integer number here. So every every variable will be given an address. तो base address बोलते हैं. Yes, आपने पढ़ा होगा in data structure part maybe कि see हम लिखते हैं कि size of integer variable is 2 byte. हम लोग बोलते हैं 2 byte or 4 byte depend on compiler. For yes, we'll use standard concepts. So let's say 2 byte. Okay, size of integer variable is 2 byte. हम लोग बोलते हैं. Actually होता कैसा है कि every byte, yes, every byte will be having one address. 1 byte are OS are byte addressable. So every byte will have one address. Yes, so see, integer variable is 2 byte. So 5 will be stored like this. कैसे stored होता है? It's stored in binary language, but it's not our topic, so I'm not going to explore that. 5 is stored in 2 dibba and every 1 byte. This is 2 byte.
ओके हम बोलते हैं कि साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज 2 बाइट, तो bytes. Okay, and 1 byte equal to 8 bits. 1 byte equal to 8 bits. Yes. तो कैसे स्टोर होता है? It is stored in binary language or binary 0101. You might be knowing. Okay. So every byte, जैसे मैंने बोला, हर एक बाइट का एक बेस एड्रेस होता है, एक एड्रेस होता है. एड्रेस इज द नंबर. विल सी प्रैक्टिकल जब देखेंगे तभी समझेगा. ओके, लेट्स से ये फर्स्ट वाले बाइट का एड्रेस इज 100, सेकंड वाले बाइट का एड्रेस इज 101. यस, तो दिस 5 is stored like this in the memory. So address of x, if I address of operator, we'll see address of operator now. So this is called address of operator. Address of operator returns the address of variable. Yes, if I write cout, yes, cout जैसे x है, तो if I write address of x, तो what it will return? It will return the address of x. Let's say address of x, x जैसे मैंने ऐसे stored है, yes, 100 101, तो it will return the 100 base address. First byte का जो एड्रेस होता है वो रिटर्न करता है, तो इट विल आउटपुट विल बी 100. ये एक्चुअली 3 डिजिट में नहीं होता है, इट विल बी इट्स अ वेरी लार्ज नंबर. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो विल कम टू नो. जैसे मैंने बोला, लेट्स से इंट, यस, उसमें 5 स्टोर्ड है. लेट मी डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल. जैसे मैंने बोला, पॉइंटर वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करते हैं. सपोज आई वांट टू प्रिंट, यस, एड्रेस ऑफ एक्स. आई एम दिस इज, आपने इफ सी पढ़ा होगा तो स्कैनएफ में यूज किया होगा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. यस, हेक्साडेसिमल नंबर में. सो इट्स वेरी लार्ज नंबर, एड्रेस ऑफ एक्स. अभी पॉइंटर वेरिएबल, जैसे मैंने बोला पॉइंटर वेरिएबल, पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल. इसको कैसे रीड करूंगा मैं ये चीज को? तो पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अदर पॉइंटर. ओके, यूज्ड टू स्टोर अदर. सी, इसका टाइप क्या है? इंटीजर. तो you can only store address of integer variable, other integer variable. So this is what we define pointer. This is how we define pointer variable. See, as the definition goes, I should store address of other integer variable. X is an integer variable. If I store address of x, address of x कैसे मिलेगा? Yes, this thing will return address of x, and according to the definition of pointer variable, what I am doing here, p is a pointer variable used to store address of other variable. So I am storing the address of x variable in p. Diagrammatically कैसे होगा? यहाँ पे देखो. Yes, x के लिए डिब्बा बनाया था. This is x. This is x. Yes, 5 stored है. उसका मैंने बोला बेस एड्रेस होता है. सी, x is an integer variable, 2 bytes होता है, हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है, बट एड्रेस ऑफ x क्या रिटर्न करता है? बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट. सो लेट्स से उसका बेस एड्रेस है 100. यस, सो if I have pointer variable p, जैसे हमारा ये एग्जांपल में pointer variable p is a pointer variable, and note that size of pointer variable depends on your system. If it is 32-bit system, it is 4 byte, and when it is 64-bit system, it is, yes, 8 byte. So here
p is pointing to x, उसका मतलब क्या होता है? This means p is pointing to x. Write down here if you want. P is pointing to variable x. So here I am storing the address of x. Yes, 100. Here I am storing the address of x. Practically देख ले, हमें मिल गया. Because I am using online compiler, it will keep on changing. Address will keep on changing. So don't get confused about that. कि पहले ये नंबर आया था, सेकेंड टाइम रन किया तो दूसरा नंबर आ गया. Yes. तो and then C. This is address of x stored in p variable. First time I am printing address of x stored in p. This is what we are doing. This is pointer variable. Any doubt, anyone? सर एक बार फिर से बता नहीं. आपको क्या नहीं समझा? Tell me. और क्या समझा? वो एंड सिंबल कैसे लगाया वो नहीं. और yes, किस लिए लगाया? मैंने जैसे बोला, it's an address of operator. जैसे हमारा डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, yes, प्लस माइनस वगैरह, वैसे ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है. एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, yes, रेफरेंस भी बोलते हैं इसको. ठीक है, अभी के लिए एड्रेस ऑफ याद रखो, रेफरेंस हेवी हो जाएगा आपके लिए. ओके, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? जैसे उन्होंने इफ आई राइट एड्रेस ऑफ एक्स, तो इसे रीड कैसे करेंगे? एड्रेस ऑफ एक्स, तो इट रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स, बेस एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स 100 रिटर्न करता है ये चीज. यस सर, समझा. समझा? तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. नो, एड्रेस ऑफ एक्स आई एम स्टोरिंग इन वेरिएबल p. I can't store address of this address of any integer variable into other integer variable. Suppose p मेरा pointer variable नहीं होता तो I won't able to do that. So I hope it's clear. Pointer, किसी को कुछ लिखना है, डाउट है तो you can acknowledge. Otherwise we'll move forward. Yes, the second is, one more thing is that dereference operator. Dereference operator. Okay. Dereference operator क्या होता है? जैसे x अभी के लिए ऐसा है हमारा, yes, उसका बेस एड्रेस एग्जांपल के लिए हम लोग ने 100 लिया. p is a pointer variable जिसमें उसका बेस एड्रेस स्टोर्ड है. p is pointing to x. p is pointing to x मतलब p के अंदर एड्रेस ऑफ x स्टोर्ड है. नाउ सपोज मुझे p using p वेरिएबल I want to access variable x. Using p I want to access variable x, तो I will be using dereference operator स्टार, जो हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं. दैट्स ओनली मतलब स्टार. ओके, इसे बोलते हैं dereference operator. So it is used to dereference a pointer variable. Example लेते हैं. If I write cout is cout address of x, क्या प्रिंट होना चाहिए? 100. Yes, 100 print. If I write p, क्या होना चाहिए प्रिंट? 100. Yes. But if I write cout, if I want to access, if I write x, let's say x,
x में क्या प्रिंट होना चाहिए, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 5. यस, इफ आई प्रिंट x इट विल प्रिंट जस्ट 5. बट जैसे मैंने बोला कि इफ आई वांट टू एक्सेस वेरिएबल x यूजिंग वेरिएबल p, पॉइंटर वेरिएबल p, तो आई विल बी राइटिंग स्टार p. p मतलब स्टैंडिंग आउटसाइड, ऐसे समझो. p मतलब स्टैंडिंग आउटसाइड एंड स्टार p मतलब स्टैंडिंग इनसाइड. यस, तो स्टार p विल रिटर्न 5. देख लेते हैं. हैंडल देख लेते हैं. What happened? Okay, we'll need to use the compiler. Okay. Yes, star p will be printing. Okay, handle लिखना है. Okay, handle. Yes, क्या प्रिंट कर रहा है? Star p is printing 5. Value stored under variable x. I hope it's clear to all. Shall we move forward? Okay. So this was just basic pointer. Now we're going to study array of pointer and pointer to array. किसी को लिखना है, डाउट पूछना है on pointer, you can ask. Pointer ने array पे कुछ डाउट होगा, you can ask me. In data structure, we'll be having different algorithms on this array, like searching, sorting, binary search. Do it properly in data structure part. Okay. The next topic is pointer to array. We know array, we know pointer. Now we're going to learn pointer to array. Array declare करते हैं कोई भी एक. Let's say int a. Let's keep it simple for now. So how I'm going to read this is an array of 5 integer variables, 5 integer elements, whatever. Okay. And p is a pointer variable used to store address of other integer variable. मैंने बोला a is an array of 5 elements. Let's draw it for better understanding. Let's say array में कुछ value stored है already. Yes, array index will be from 0, 1, 2, 3, 4. जैसे मैंने बोला था हम लोग ने वेरिएबल x देखा था. Yes. तो उसका डिब्बा बनाया था और उसको डिब्बे को एक बेस एड्रेस था. Yes, every variable, every byte, yeah, each and every byte will have an address. So size of int variable is 2 byte. तो उसका दोनों बाइट का एक एड्रेस होगा. Yes, 100 and 101. Similarly, array भी तो स्टोर हो रहा है मेमोरी में, उसका हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस होगा. Yes, so
if it is 100 है, suppose first element का base address 100 है, what will be the address of second element? Can anyone tell me? If first element ka 100, yes, Tejas, very good, Tejas. If it will be 102 and not 101. Q, because size of integer variable is 2 bytes. Every byte will have separate address. Okay. Because Q ye 102 are because it is continuously stored. Yes. 104, 106, and 108. This is how it will be stored. Now, if I say, जैसे हमने p को point करा था to x, p हम बोल रहे थे p is pointing to variable x. Similarly, a pointer variable can point to array. जैसे as the name suggests, topic बोल रहा है pointer to array. P is a pointer variable which will be pointing to array A. If I write this, what is it? This is okay. P is pointing to yes A. अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? Why I'm writing like this? क्योंकि हम लोग x के लिए yes x के लिए ऐसा था तो हम लोग लिख रहे थे p address of x. We were using address of operator, but यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं because a int a जो लिख रहे हैं it actually stored as like this. The base address of first element already stored. Array name without square bracket returns the base address of first element of array. एक एग्जांपल लेंगे तो पिक्चर क्लियर होगा. यहाँ पे देखो, see this is an array of 5 elements. Now as I said कि a के अंदर base address of first element stored होता है. See out. Let's first print address of first element. Yes, initialize भी कर लेते हैं यहाँ पे. No need to take input from user. 10, 20, let's say 30, 40, and 50. Yes, ये initialize कर दिया. 5 elements stored in array. तो address of let's say first element चाहिए मुझे. तो yes, first element at present at index number 0. And array name. Yes, array name without a square bracket contains the base address of first element of array. Actually, a is also a pointer variable. It is pointing to it's constant pointer variable pointing to this first element of array. Actually, ऐसे read करा जाता है. समझता है तो ठीक है, वरना no need to go that much deeper for now. Okay. Okay, and I'll लिख देते हैं. Yes, first element and a सेम हो रहा है जैसे मैंने बोला था. yes, a के अंदर एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होता है. yes, so I'm just putting 100 into p. That's it. This is a pointer to array. P is another pointer variable of type int in which I'm storing the address of first element of array. Now again p is pointing to this. समझा pointer to array? इतना समझा? थोड़ा थोड़ा? Yes. सर वो a के अंदर p स्टोर है बताओ ना फिर से. a के अंदर? लास्ट में बता ना आपने कि p पॉइंट करेगा a को बाद में मेमोरी लोकेशन को, वो बताओ. यहाँ पे देखो कैसा होता है. If when I write a is an array of 5 elements, ये एक्चुअली कैसे स्टोर होता है मेमोरी के अंदर कि एक एरे बन जाता है मेमोरी के अंदर से एरे कंटिन्यूअस एलिमेंट स्टोर हो जाते हैं एंड बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ए के अंदर स्टोर होता है. यहाँ पे a is also a pointer variable but ये constant है. It can only point to this first element of array. Okay,
तो उसके अंदर बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट स्टोर हो जाता है, जिसे हमने देखा यहाँ पे। यस, फर्स्ट एलिमेंट है a ऑफ 0, फर्स्ट एलिमेंट है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। यस, तो Yes. इट विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो ये है, एंड a इफ आई राइट वेरिएबल नेम, वो वेरिएबल के अंदर जो चीज है वही प्रिंट करता है। यस, तो वेरिएबल के अंदर क्या चीज है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, दैट्स व्हाई इट्स प्रिंटिंग द सेम थिंग, सेम एड्रेस प्रिंट हो रहा है, देखने यहाँ पे। Yes sir, समझा। Now pointer, yes, p is a pointer of type int used to store address of other pointer variable. If I make this pointer p to point to an for array a, तो वो किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ array. Yes, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, मतलब आई एम जस्ट पुटिंग द व्हाट आई हैव स्टोर्ड इन a in p, that's it. I hope it's clear. Yes sir. Now if I write a plus 1, will it allow me to do so or not? It will not allow me. Try करते हैं. No, because okay, for now and okay, ये जस्ट हम लोग प्रिंट कर रहे हैं. इफ आई इंक्रीमेंट इट, यस, नॉर्मल वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं. इफ आई इंक्रीमेंट पॉइंटर वेरिएबल, इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय द साइज ऑफ एलिमेंट टू विच इट इज पॉइंटिंग टू. देख लेते हैं यहाँ पे. Yes, now I'm trying to print a. It will not allow me. It will give error. Compiler रुक गया. It will not print anything. अच्छा, error दे दिया. क्या लिखा है? अच्छा, ये लोग ने बराबर error mention नहीं किया है. क्या error है? I will tell you. See, जैसे मैंने बोला, a is a constant pointer pointing to first element of array. While p is not a constant pointer. p कोई भी कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट ऑफ टाइप int को पॉइंट कर सकता है, बट a के लिए नॉट द सेम केस. a कैन ओनली पॉइंट टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ array. Okay, that's why it is giving me an error. I can't make my a to point to other variable. Okay, so we are just incrementing a, we are changing a, we can't change it because it's constant pointer. Okay, if I do like this, suppose I have pointer variable p. Yes, pointer variable p. It is pointing to first it's pointing to array, let's say. Yes, so क्या होगा सीन यहाँ पे, p is now also pointing to first element of array, but since it's not a constant pointer, पहले p print करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं. Yes, same cheese. Yes, base address of first element of array. Now if I try to write p plus plus, yes, increment कर रहा हूं, it will print the base address of next element. Next element, that is a of 1 का base address देगा मुझे. Since it got incremented by 4 byte, ये 70 था, 70 था, ये 74 हुआ. But sir, मुझे ये नहीं समझ रहा है, if मैं i को इंक्रीमेंट करता था तो वो इंक्रीमेंट बाय 1 होता था. if i इक्वल टू 1 है, मैं i प्लस प्लस लिखता हूं तो वो 2 हो जाता है. बट यहाँ पे डायरेक्ट 4 क्यों हुआ? Yes, because it's a pointer variable. मैंने बोला था size of pointer variable, yes, 4 byte, and वो increment और decrement करते हैं, तो it gets incremented and decremented by the size of pointer variable to which it is pointing to. Since right now p is pointing to integer variable, and for this compiler size of
integer variable is 4 byte, so it will get incremented by 4 byte. So if I write p, if I write p plus plus, so what does that mean? P will be get incremented from 100 to 102. यहाँ पे 2 बाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए it is 102, otherwise it would be 104. Yes, it will not incremented from 100 to 101. It will be incremented from 100 to 102 because here we are assuming size of integer variable is 2 byte and p is a pointer variable pointing to integer variable. Listen to me carefully, you will understand this. Yes, if I write p plus plus, it means p will get incremented by, yes, size of variable it is pointing to. Since right now it is pointing to integer variable, it will get incremented by size of integer variable. So it will incremented by size of integer variable, so it will be updated from 100 to 102 for this case. And here, since ye compiler ke size of integer variable is 4 byte, so it got incremented by 4 byte. I hope it's clear. Yes. Yes. Suppose now I write star p. क्या print होना चाहिए? Can anyone tell me? If I write now, I write star p, what should get printed? Second memory location. Yes, it will print 20. Yes, आ रहा है? Handle डालने को भूल गए, डाल ही देते हैं. Okay, so this is pointer, guys. If you have any question on pointers, you can ask me. This is pointer to array. Any doubt, anyone? No doubts. Okay. Array of pointer. Next topic is array of pointer. Array of pointers क्या होता है? See, जैसे हम लोग array of integers लिखते हैं, similar way में we have array of pointers. Array of character होता है, तो हम character element store करते हैं array के अंदर. Yes. Array of integer होता है, we store integer variables in that array. If I have array of pointers, so I will be storing, yes, array or pointer variables inside my array. तो कैसे लिखते हैं? So syntax is this. Int, suppose I want to store pointer variables pointing to some integer values or integer variables. Okay, तो कैसे लिखूंगा? Start A5. इसको रीड कैसे करेंगे? First of all, तो A is an array of 5 elements, and those elements, see, A is an array of 5 elements, and those elements are pointing, yes, to variables of type int. Or in short, if you want to read this, A is an array of 5 integer pointers. Definition समझ रहा है सबको? Array of pointers क्या होता है? थोड़ा थोड़ा. Yes. एक एग्जांपल लेंगे, पिक्चर क्लियर होगा. Okay, let's keep this only. Suppose I have
इक्वल टू 5. ओके, सेम लाइन पे कर देते हैं. You know, right? We can do this on same line. Yeah, let's say it is. I have 3 integer variables, and now I have array. Yes, array of pointers. First element को access कैसे करता हूँ? A of 0 will be my first element of array. Yes, ये array का first element मैं ऐसे लिखता हूँ. But since now first element is not an integer, it's an pointer variable. तो मैं क्या स्टोर करूंगा उसके अंदर? Address of some other variable of type int. Yes, A of 0 is now a pointer variable which can store address of other integer variables. Yes, तो उसके अंदर मुझे address स्टोर करना है. Let's say मैं address of x स्टोर कर रहा हूँ in A of 0. In A of 2 or A of 1, yes, I'm storing address of y. And A of 2, I'm storing address of z. See, this array is an array of pointer variables. Okay, so I will be storing address of other variables in this array because elements are pointers to integer variables. Now let's try to print it. If I print A of 0, it will return me the address of x. Let's see it. Yes, ये जो चीज क्या है वो ड्रॉ करके देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है हमारे पास? हमने लिखा है int star a of 3 elements and x में क्या स्टोर्ड है? 5, y में स्टोर्ड है what is 5? 9 and 6. Okay, 9 and z में स्टोर्ड है 6. सब एलिमेंट और सब इंटीजर वेरिएबल का एक बेस एड्रेस होगा. लेट्स से इसका 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है. Yes, now what I'm doing is first element of array is a pointer variable in which I can store address of any integer. I am storing the address of x. Yes, उसका मीनिंग क्या हुआ? ये A array में 3 elements है. First element is pointing to x, second element is pointing to y, and third element is pointing to z. Yes, इसका index 1 0 1 2. तो A of 0 में I am storing address of x. तो what does it mean? First element of array is pointing to x. That's why it is giving me the same address, the address of x and address stored inside first element of array. I hope it's clear. Suppose I want to access the value stored inside variable x. How will I need to access that? Yes, using this array element, I will be using star array. See now. Okay, just sorry, it's 0. And L will be there. Yes, it is 5. Value stored inside variable x. Any doubt, anyone? फिर से रिपीट नहीं करना है. क्या नहीं समझा आपको? That will going to repeat. क्या नहीं समझा और क्या समझा? फर्स्ट मेरे को ये बोलो, क्या समझा आपको अभी तक एरे ऑफ पॉइंटर्स के अंदर? सर वो पॉइंटर मतलब पॉइंट करता हूँ समझा, वो वाला नहीं समझा. वो 3 जो लिखा है ना लास्ट कोडिंग में वो वाला. ये चीज यस. ओके. क्या हो रहा है? सी, मैंने क्या बोला? A is an array of 3 elements. Yes,
पहले हमारे पास एक नॉर्मल एरे होता था और 5 एलिमेंट्स था, हमने देखा था इसके पहले वाले केस में 5 एलिमेंट्स का एरे था जिसमें हम लोग इंटीजर वेरिएबल स्टोर कर रहे थे. नाउ ये एरे है ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स. ओके, तो वी आर स्टोरिंग पॉइंटर्स इन दिस एरे. अभी वो पॉइंटर का भी एक कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है. वो पॉइंटर वेरिएबल्स का टाइप क्या होना चाहिए? इंट. पॉइंटर वेरिएबल का टाइप इंट होना चाहिए. नहीं समझा सर, क्या बोल रहे हो? मतलब दैट पॉइंटर वेरिएबल शुड पॉइंट टू अनदर इंटीजर वेरिएबल. वो पॉइंटर वेरिएबल कैरेक्टर को पॉइंट नहीं करना होना चाहिए. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग, नो, we are just storing the address of other variables. X is an integer variable. I am storing the address of that X in first element of array, a of 0, because a of 0 is now my pointer variable and not integer variable. If ये integer array होता तो इसके अंदर मैं value store करता. Yes, yes, B is a integer array. तो उसके अंदर क्या store करता हूं मैं? उसके अंदर वैल्यू स्टोर करता हूं. यस, कुछ भी दे दो. 4, यस, बी, सॉरी, बी ऑफ 1, यस, 2, बी ऑफ 2, 9. ओके, सी नाउ बी के यहाँ पे स्टार नहीं लिखा मैंने. उसका इसको रीड कैसे करते हैं? बी इज एन एरे ऑफ 3 एलिमेंट ऑफ टाइप इंट. Yes, you can store integer elements in this array. Elements of this array, उसका टाइप क्या है? Integer. यहाँ पे is an array of 3 elements and elements are nothing but a pointer to integers. ये देखो, here we are storing address of different integer variables, and here we are storing just value because इसका टाइप क्या है? Int. और इसका टाइप क्या है? Int star. मतलब pointer to integer. I hope अभी समझा. Yes, address of X. Any doubt anyone with this array of pointer का concept? Yes, no. Okay, let's switch to next topic, that is function. Yesterday someone was asking what is return, what is int. Yes, let's do function today. Function क्या होता है? Set of instruction. Simple. Set of instruction to perform a particular task. ठीक है? ओके, तो डेफिनेशन से क्या समझते हैं? फंक्शन किसे बोलते हैं? कुछ स्पेसिफिक काम है, लाइक टू ऐड 2 नंबर्स. तो इफ मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, इफ मुझे बार बार चीजें ऐड करनी है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी जेड सम इक्वल टू a plus b and then yes printing sum, I will write a function for that जो रिपीटेडली मैं यूज करूं. तो आप लोगों ने स्वैपिंग पढ़ा होगा, आई डोंट नो. स्वैपिंग इज जस्ट x में 5 स्टोर्ड है, y में 10 स्टोर्ड है, तो हम लोग स्वैप करेंगे वैल्यूज, तो y में 5 आएगा, x में 10 जाएगा. ओके, तो इफ आई एम डूइंग स्वैपिंग मल्टीपल टाइम्स इन माय प्रोग्राम, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम लाइन ऑफ कोड फॉर स्वैपिंग अगेन एंड अगेन, मैं एक ही बार लिखूंगा और को बार बार यूज करूंगा बाय डूइंग फंक्शन कॉल. बेसिक समझ रहे हैं व्हाट इज फंक्शन? सी, जैसे मैंने बोला, इफ आई वांट टू ऐड 2 नंबर्स, यस, x एंड y, तो मैं क्या लिखता हूं? x कल किसी ने बोला था एक नया वेरिएबल लेके सम के अंदर भी करता है, या
सम और लेट्स से z के अंदर मैं x प्लस वाई करता हूँ, देन मैं प्रिंट करता हूँ z को यूजिंग सी आउट और वट एवर, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो. यस, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, मैं कुछ ऐसा एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना दूं जो मैं बार बार यूज कर सकूं, कि जस्ट आई विल पास टू वैल्यू एंड मुझे सम रिटर्न हो जाएगा, सम ऑफ टू नंबर्स. जैसे ये सम तो बहुत छोटा चीज हो गया. हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स मतलब सपोज x के अंदर यस कुछ वैल्यू स्टोर्ड है 5, यस, एंड y के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर्ड है 10. स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स मतलब आई वांट कि x के अंदर 10 चला जाए एंड y के अंदर 5 चला जाए. तो व्हाट आई विल डू इज, आप लोग ने देखा होगा कि विल टेक वन मोर एक कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं. व्हाट वी डू इज, पहले टेम्पररी वेरिएबल के अंदर x में जो स्टोर्ड है वो स्टोर कर देते हैं. यस, दैट इज x. तो टेम्प में 5 चला गया. यस, नाउ y के अंदर, और क्या y के अंदर क्या डालूंगा, x. पक्का कि x के अंदर y डालूंगा, टेम्प डालना, x के टेम्प लास्ट में आएगा. यहाँ पे देखो, मुझे क्या करना है, x में y का मतलब x में 10 डालना है, y में 5 डालना है. दिस इज माय टास्क. x equal to y, x इक्वल टू y की y इक्वल टू x, y equal to x. लास्ट में. तो y में क्या आ गया अभी, y इक्वल टू x क्या मतलब क्या आ गया 5, एंड लास्ट में x इक्वल टू y करूंगा कि y इक्वल टू x करूंगा. ओके, किसी ने दिया है x इक्वल टू y. वेरी गुड तेजस. x इक्वल टू y करूंगा. ओके, यस, x इक्वल टू y. x इक्वल टू y किया मतलब क्या हुआ, y x के अंदर y का वैल्यू गया, दैट इज 10. लास्ट में x और y, x में तो आ गया y और 10, अभी y लूंगा, तो y इक्वल टू 10. मतलब y के अंदर क्या आया अभी, टेम्प में क्या था 5 था, टेम्परेरीली हमने x का वैल्यू टेम्प में स्टोर किया था, y के अंदर 5. यस, वी डिड स्वैपिंग. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 3 लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, मैं कुछ ऐसा फंक्शन बना लूंगा कि मैं जस्ट 2 नंबर पास करूंगा x एंड y, जिसको भी मुझे स्वैप करना है, एंड वो स्वैप करके रिटर्न कर देगा. यस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 3 लाइन ऑफ कोड एंड यूजिंग टेम्प वेरिएबल अगेन एंड अगेन, मैं ऐसा कुछ फंक्शन लिख दूंगा जो मुझे स्वैप करके रिटर्न कर देगा. मैं जस्ट 2 नंबर पास करूंगा, जैसे अभी printf scanf फंक्शन यूज करते हैं. यस, printf का डेफिनेशन कभी हमने लिखा है कि एक्चुअली कैसे काम करता है, हमने देखा है नहीं. वी आर जस्ट यूजिंग printf function scan. ओके, इट्स C++, राइट. तो वी आर जस्ट यूजिंग सी आउट एंड सी इन. उसका अभी हम कैसे वर्क कर रहा है, कैसे प्रिंट कर रहा है स्क्रीन पे, वो कभी देखा नहीं हमने. सिमिलर वे में वी आर क्रिएटिंग समथिंग जिसका डेफिनेशन में एक ही बार लिखूंगा. सी आउट एंड सी इन का डेफिनेशन किसी ना किसी ने एक ही बार लिखा है, एंड कभी सदियों से हम लोग वी आर जस्ट यूजिंग सी आउट एंड सी इन. यस, हमें लिखना नहीं पड़ता है कोड उसके लिए. सिमिलरली स्वैपिंग के लिए व्हाट इफ आई राइट सम फंक्शन, ऐसा कुछ लिख दूं जिससे जस्ट यूजर 2 वैल्यूज पास कर देगा, 2 वैल्यूज देगा फंक्शन के अंदर, एंड मुझे मेरा रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो. यस, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स का एक एग्जांपल लेते हैं. तो
Okay, so first of all, there are three parts in functions. Before going to anything, let me brief you about this. यहाँ पे functions में three parts है. One is function declaration, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. Second is function definition. And third is function calling. Here, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int x, yes, वे सिमिलर वे में we are just declaring a function कि एक्चुअली क्या होने वाला है. Here हम लोग रियल में कोड लिखते हैं कि फंक्शन क्या करना चाहिए, yes, और क्या रिटर्न करना चाहिए. For that we write a code. And function calling is we are using the function. जैसे सी आउट सीन लिखते हो, you are doing function calling. हमने फंक्शन का डेफिनेशन कभी देखा नहीं है. फंक्शन को डिक्लेयर फॉर सी आउट एंड सीन वी कैन से कि आप लोग ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड करते हो. यस, आईओ स्ट्रीम वो सी आउट एंड सीन के लिए इंक्लूड करते हो कि किसी ना किसी ने दे सी आउट एंड सीन के लिए फंक्शन लिखा है. यस, एंड यू आर जस्ट यूजिंग इट. वी आर जस्ट कॉलिंग सी आउट एंड सीन. वी आर जस्ट कॉलिंग द फंक्शन. वी आर जस्ट यूजिंग द फंक्शन. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल से ये तीनों चीज समझते हैं कि वो क्या होता है. फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग. यस, ओके. तो डिक्लेरेशन हम लोग बाहर करते हैं मेन फंक्शन के बाहर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिक्लेयर दिस कि मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा. सी, मेरा फंक्शन ये रिटर्न टाइप है. ओके, this is function name and attributes जो भी लेने वाला है वो लिखेंगे. तो वो दो इंटीजर वेरिएबल लेने वाला है फ्रॉम यूजर जब कॉल करेगा. जैसे सी आउट एंड सीन में जैसे टेक्स्ट पास करता है डबल कोट्स के अंदर, सिमिलर वे में हियर जो भी करना है, स्वैप करना है तो 2 नंबर का स्वैप करना है तो हम लोग 2 नंबर इनपुट लेंगे. तो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन. फंक्शन डिक्लेरेशन. यस, अभी फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग देख लेंगे उसका सिंटैक्स. यस, फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे लिखा हमने. यस, रिटर्न टाइप दैट इज ओके. हमने लिखा था इंट स्वैप. यस, ऐसे लिखा हमने. यहां पे दिस इज रिटर्न टाइप. दिस इज फंक्शन नेम. दिस आर एट्रीब्यूट्स. इसमें भी टाइप्स होता है. अभी के लिए एट्रीब्यूट समझो. Very soon I will going to generalize that. Okay, तो ये हमने डिक्लेयर किया फंक्शन को. अभी हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे. Anyone want to write? Yeah. यस सर. सर रिटर्न टाइप की जगह उधर वॉइड भी डाल सकते हैं ना. यस, ये इंट क्यों लिखा है मैंने. बिकॉज स्वैप फंक्शन स्वैप करने के बाद मुझे 2 नंबर रिटर्न भी करना चाहिए. यस, स्वैप करने के बाद 2 नंबर रिटर्न करना चाहिए. तो दिस दैट्स व्हाई और रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर नंबर्स. यस, तो दैट्स व्हाई आई रॉट इंटीजर. जो भी रिटर्न करता है उसका टाइप. वॉइड लिखेंगे तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा. कैर लिखेंगे तो कैरेक्टर रिटर्न करेगा फंक्शन. तो बेस्ड ऑन आवर नीड, अभी स्वैपिंग में मुझे चाहिए कि वो स्वैप करने के बाद मुझे 2 नंबर रिटर्न भी कर दे, तो आई राइट इंट.
sir, we can swap using yes variable point, that is called call by reference. हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है. Yes, शुभम. This is what we are doing, call by function, call by value, sorry. We are doing here call by value. We are calling a function by passing value. Yes, हम लोग वैल्यू ही पास कर रहे हैं. स्वैपिंग के लिए, दो नंबर को स्वैप करने के लिए we are just passing the value. अच्छा, इफ आपको void लिखना है we can write void here. ओके, लोग कोड में चेंजेस करते हैं, बट ये समझो बेसिक सिंटैक्स की डिक्लेरेशन, इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन. ओके ओके. अच्छा, किसने बोला अभी void? ओके, void रखते हैं. चलो, तो उसका रिटर्न टाइप void है, ये फंक्शन नेम है. ओके, तो दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन. अभी डेफिनेशन लिखेंगे. तो डेफिनेशन में मैंने जो क्या बोला था कि एक्चुअली में जो करना है उसके लिए कोड लिखते हैं. यस, तो मैं दो वेरिएबल लूंगा x एंड y, इंट y. यस, फंक्शन यस, ओपन कर्ली ब्रेसेट. यस, देन उसका रिटर्न क्या होगा. तो बिफोर रिटर्निंग द वैल्यू, रिटर्न टाइप तो void है, तो मैं कुछ रिटर्न करना नहीं चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिखे, रिटर्न नहीं लिखा तो भी चलेगा. नो नीड टू राइट रिटर्न ऑल्सो. इफ इंटीजर होता तो मुझे कोई इंटीजर नंबर रिटर्न करना पड़ता यूजिंग रिटर्न कीवर्ड. ओके, नाउ सी x एंड y दो वैल्यू आ रहा है फंक्शन के अंदर. अभी मुझे स्वैप करना है, एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे हमने किया था temp. यस, नाउ temp के अंदर मैं x स्टोर कर दूंगा. यस, बाद में क्या होगा, x के अंदर y. X Yes. yes. x के अंदर y, लास्ट में y के अंदर और z के अंदर. y के अंदर temp के x के अंदर, y के अंदर टेम्प. पक्का? हाँ, नहीं हो एटलीस्ट. y के अंदर temp. Sorry. So y equals to 10. ओके, हो गया स्वैपिंग. यस, नाउ मुझे फंक्शन कॉल करना है, जैसे सी आउट एंड सी इन का डायरेक्टली यूज करते हैं हम लोग. सिमिलरली इफ आई वांट टू जस्ट डायरेक्टली यूज, आई वांट जस्ट कि मैं एक लाइन लिखूं एंड मेरा नंबर स्वैप हो जाए. ओके, तो x इक्वल टू 5 है, y इक्वल. ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं सी आउट. यस, बिफोर स्वैप क्या वैल्यू था x एंड y में, वो देख लेते हैं. यस, बिफोर स्वैप x एंड y. and after swap.
आफ्टर स्वैप x and y. यहाँ पे I will call swap. So okay, so this is function definition. This is function definition, and now I'm doing function call. function call. Okay, so I will just pass the value. जिस जो भी 2 नंबर का स्वैप करना है वो 2 नंबर पास होंगे. This is function call. Let's try to run the code. Okay, handle में लिखा है. क्यों स्वैप नहीं हुआ? रिटर्न नहीं किया उसने. रिटर्न नहीं किया तो क्या करेंगे अभी? क्या लॉजिक लिख सकते हैं इसके लिए? Can anyone tell me? इंट स्वैप की जगह वॉइड स्वैप की जगह इंट अलग रखना. Yes, रिटर्न करना पड़ेगा. Yes, वैल्यू. Yes. एंड रिटर्न में क्या लिखो? क्या रिटर्न करेगा? X and y. दो वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं. No सर, एक ही वैल्यू करेगा 2 बाइट. एक्स एंड वाई ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? You will going to tell. कैसे करेंगे? बोलो. सर ऐसे 2 बार लिखना पड़ेगा, रिटर्न x और रिटर्न y. बट 2 बार रिटर्न नहीं कर सकते ना हम लोग. रिटर्न जब एग्जीक्यूट हुआ तो यू विल कम आउट ऑफ फंक्शन. समझा कि ये जब एग्जीक्यूट होता है ना रिटर्न, तब तुम एग्जीक्यूशन विल कम आउट फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ पे आ जाते हो. देन यू कांट एग्जीक्यूट. अभी सपोज रिटर्न के बाद मैंने कुछ कोड लिखा है, सी आउट लिखा है सपोज, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. After you are just returning from this code to here. कैसे अचीव कर सकते हैं? Can anyone tell me? ओके, ठीक है. इट्स अ होमवर्क फॉर यू. इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं. बहुत सिंपल है, सिर्फ सोचना है. जस्ट आई वांट टू सर्व द 3 things, that is function declaration, function definition and function calling. तीनों चीज समझ गया सबको? यस. ये सोचना है. This is a problem statement for you. This is homework. अभी सेम चीज सपोज किसी ने बोला था अभी आपकी क्लास में से पॉइंट. सो हियर इट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू मतलब आई एम कॉलिंग अ फंक्शन बाय पासिंग द एक्चुअल पैरामीटर. जो हम लोग वेरिएबल पास कर रहे हैं, यस, ये जो पास कर रहे हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई आर एक्चुअल पैरामीटर्स. आई एम जस्ट पासिंग जो भी इंट मेन. सी मेन, इंट मेन, दिस इज अ मेन फंक्शन. दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन. ओके, जो क्या कर रहा है? रिटर्न 0. यस, उसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट. दिस इज मेन फंक्शन. इज बाय डिफॉल्ट आप जो भी कंपाइलर ओपन करोगे मेन फंक्शन होगा ही. और एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन. एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है. यहाँ से आप स्टार्ट करते हो एग्जीक्यूशन. ओके, तो मेन फंक्शन इज बाय डिफॉल्ट, you will get in every compiler. Okay, तो in main function we write a code. अभी समझा क्यों लिख रहे थे int main return 0? स्टार्टिंग से बार बार लिख तो रहे थे बट कुछ पता नहीं था what is main. तो main is a function, okay, जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है हमारा कोड का. सो ओके, हमने ये स्वैप के लिए लिखा.
सपोज मुझे एडिशन के लिए करना है सेम चीज, कैसे करूंगा? और लेट्स से I want to write a function for, क्या है आपको कुछ सिलेबस में कोई एनीवन क्या फंक्शन लिखना है बोलो, आपका चॉइस, कोई भी फटाक से। सिलेबस में वर्ड दिए है। सिलेबस में हेलो, आपकी चॉइस है, कोई भी एक फंक्शन लिखता है। यस, आपको फैक्टोरियल पता है? यस सर। सर फिबोनाची सीरीज बता ना, फिबोनाची। फिबोनाची सीरीज वो ये इसमें होगा, रिकर्जन में यूज होगा, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा अभी के लिए फॉर अदर्स। इफ आपको पता है तो वी कैन डू इट लेटर, जस्ट इसके बाद कर देंगे फिबोनाची, बिकॉज इट्स अ रिकर्जन पार्ट, वो रिकर्जन होता है उसमें, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ओके, लेट्स मुझे एक बेसिक फंक्शन, बिकॉज स्वैप में आप लोग ने दिया नहीं आंसर, बहुत इजी है। सी, मैं एक हिंट दे देता हूँ कि इफ आई कांट रिटर्न, तो मैं फंक्शन के अंदर ही क्या, किसने, तेजस ने बोला फंक्शन एक्स वाई यूज कर सकते हैं फॉर स्वैप। फंक्शन एक्स वाई, ओके, आपने डिक्लेयर किया है, आपने क्रिएट किया है फंक्शन। यस तेजस, इफ जैसे मैंने कहा फंक्शन का नाम यहाँ पे मेरा स्वैप था, तो वैसे आपने इफ फंक्शन का नाम FUNCT ऐसे लिखा है, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, सिमिलरली फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। ओके, व्हाटएवर, इट्स योर चॉइस। सो मैं एक हिंट दे देता हूँ कि जहां पे हम लोग स्वैप कर रहे थे, ओके, यहाँ पे रीडू हो रहा है, क्या हो रहा है? ओके, यहाँ पे सी, मैंने बोला कि वी कांट रिटर्न टू नंबर्स, राइट? मैं एक्स एंड वाई को रिटर्न नहीं कर सकता। ओके, चलो मुझे रिटर्न नहीं करना, तो व्हाट आई विल डू इज, क्यों ना मैं यहाँ पे ही प्रिंट कर दूं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट हियर एंड प्रिंटिंग हियर। यस, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग, इफ मैं जस्ट कॉल करूं ये चीज, सॉरी, यही सेम चीज मैं यहाँ पे लिख दूं, काम हो जाएगा मेरा। यस, रिटर्न टाइप वॉइड कर दिया, कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आफ्टर स्वैप। यस, एंड जस्ट आई एम डूइंग फंक्शन कॉल, मैं एक्स एंड वाई पास कर देता हूँ फॉर स्वैपिंग। यस, हो गया स्वैप। बिफोर स्वैप एक्स में 5, वाई में 9, आफ्टर स्वैप 9, एक्स में 9, वाई में 5। गेटिंग क्लियर? हाँ ना? यस। ओके, जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल के लिए लेट्स राइट अ फंक्शन टू अंडरस्टैंड फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल पता है आपको क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल 120। या फैक्टोरियल के लिए मुझे तो रिटर्न ही करना पड़ेगा, एक ही वैल्यू रिटर्न करना है, तो आई विल गो विथ रिटर्न टाइप एज इंट। लेट मी राइट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, जो भी नंबर का फैक्टोरियल देना है वो ऐसा इनपुट लूंगा फंक्शन के अंदर। यस, एंड नाउ दिस इज अ डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन फैक्टोरियल का। यस, इंट एन, लॉजिक क्या है फैक्टोरियल में, नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यस, इफ n है, n इक्वल टू 5 है, 5 4 3 2 1, इतना मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लूप यूज करूंगा ऑफ कोर्स। यस, लूप यूज करूंगा, लूप विल गो फ्रॉम i to n and I will keep on multiplying and store it in some new variable. Yes, int I। yes, अभी के लिए तो मुझे कहीं पे स्टोर भी करना पड़ेगा जो भी अपडेट हो रहा है। यस, फैक्ट्स फंक्शन नेम है कि कुछ भी ले लो, लेट्स से result. Yes, variable result is a variable. Now I will use for loop, and inside for loop I will go from I equal to 1
कहाँ तक जाऊंगा, n तक, बिकॉज फैक्टोरियल में 1 to n मल्टीप्लीकेशन होता है. Yes, I will be less than equal to, less than equal to n I plus plus. Now yes, हो गया इसका follow. I don't know what's happening with this compiler. Okay. Okay. Now क्या लॉजिक है, कौन बताएगा? फैक्ट स्टार आई. फैक्ट तो फंक्शन का नेम है, ये कर सकता हूँ. यस सर, रिजल्ट कर सकता हूँ. एंड लास्ट में क्या रिटर्न करूंगा मैं, रिजल्ट. रिटर्न करूंगा. ओके, रिटर्न कीवर्ड लिखना भूल गए. रिटर्न एग्री नॉट एग्री, समझा सबको क्या किया यहाँ पे? जस्ट वी आर मल्टीप्लाइंग फ्रॉम 1 to n and storing in some variable result and we are returning the result. जो फैक्टोरियल कर रहे हैं वो रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, बिकॉज रिटर्न टाइप इज इंट. ओके, सो नाउ आई विल कॉल यस fact. This is function calling as पहले किया था. This is function declaration and this is function definition. Okay, value भी पास कर. Okay, facts के अंदर हम लोग एक ही वेरिएबल पास कर रहे हैं. Yes, let's say 5 पास करते हैं. See, उसका वेरिएबल is or it's taking only one variable. So यहाँ पे ये समझ लो, this is function call. In function calling we use here, let me write in comment box. Here we use or we pass actual arguments. Yes, ये जो x है वो मेरा actual argument है. Yes, जो x फाइल stored है x में. Here we pass actual arguments in function call. And in function definition, here we use formal arguments. See, n is a formal argument here. जिसका एक्चुअल में फैक्टोरियल करना था वो x में स्टोर्ड है, but I am just copying that x into n. So this is not my actual argument. This is just formal argument जो मैं ले रहा हूँ temporarily. Yes. Okay, तो ये important चीज है, याद रखना कि function call में we pass actual argument and in function definition we use formal arguments in call by value. Okay, this is what we are doing, call by value. We are calling a function by passing just a value. अभी आगे हम लोग करेंगे कॉल बाय रेफरेंस. किसी ने आप में से किसी ने बोला था वी कैन डू इट यूजिंग पॉइंटर, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस. देयर वी विल पासिंग द एड्रेस ऑफ x and we will use pointer variables to do this swapping. Okay, so फॉर्मल आर्गुमेंट बताओ ना. फॉर्मल आर्गुमेंट्स मींस डेफिनेशन के अंदर मेरा जिस कॉपी हो रहा है, जो सी मैं x, मेरा नीड क्या है कि मुझे x में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका फैक्टोरियल करना है, उसका फैक्टोरियल रिटर्न. ओके, ये भी रिटर्न करने के बाद प्रिंट भी होना चाहिए. सो लेट्स राइट इनसाइड द सी आउट. ओके, सी फैक्ट जो भी रिटर्न करेगा वो प्रिंट होना चाहिए. उसका रिटर्न टाइप है इंट, इट विल रिटर्न रिजल्ट. अभी x एक्चुअल मेरा नीड क्या है कि x के अंदर जो भी वैल्यू है उसका फैक्टोरियल चाहिए. यस, तो दिस x इज अ एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअली मुझे इसका फैक्टोरियल चाहिए, ऐसे समझो. एंड हियर इन फंक्शन डेफिनेशन वी आर हैविंग इंट n. सी x नहीं है ना, जिसका फैक्टोरियल चाहिए वो ऊपर है ही नहीं. वी आर कॉपिंग x into n. यस, वी आर स्टोरिंग वैल्यू स्टोर्ड इन x into n एंड हम लोग n का फैक्टोरियल लेके रिटर्न कर रहे हैं. तो हियर my argument is formal. Just, you know, I just copied x to another variable and we are just doing it, calculation on that variable. Yes sir, समझा. This is formal argument. Okay, function definition में we write for formal arguments. In function calling we use actual argument.
Okay, why it's doing so? See out. Okay. I plus plus for result बराबर है. X बराबर है क्या? Let me remind the comments. Just a second. Okay. क्या गलती हो रहा है? Yes, let's store somewhere here. Let's say y. पहले स्टोर करते हैं then print करते हैं. क्या प्रिंट होता है देखते हैं. We use cout and print y. Again the same thing. It should work fine. Yes, GDB चालू हो गया क्या देख लेते हैं. Yes, तुम इंट मेन के जगह void main भी यूज कर सकते हो ये रिटर्न स्टेटमेंट हटा के. Yes, void main भी यूज कर सकते हो. If return type void होगा तो no need to return up. Okay, void main में if return लिखना भी है तो you can write like this. Okay. Is there any error? Why it's doing like this? Int x, fact x. It should work fine. Let me try this again. X should go from this side. Okay, ये देखते हैं बाद में. कुछ तो गड़बड़ है. ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है. Why it's returning address? Yeah, we are returning the integer variable. Okay, ये देख लेंगे. Let's start with call by reference first. तो call by reference कैसे होगा? We will pass pointer. Will pass pointer to function. जैसे function में हम लोग अभी values pass कर रहे थे. We will pass pointers. Okay, so let's say x में जैसे हम swapping ही करेंगे. Swapping का एग्जांपल लेंगे. Okay, x में 5 था, y में 10 था. In call by reference पहले मुझे syntax दिखा देता हूँ आपको. Call by reference. Sorry for my writing. My handwriting अच्छा नहीं आता. Okay, here. So function calling में, call by value में, we were passing variables. जितना भी जो भी definition होता था उसके हिसाब से हम लोग pass करते थे. But in call by reference, I will be passing pointer to or address of this variables, right? Address of n and address of y. यहाँ पे हमें actual and formal arguments का जरूरत नहीं पड़ेगा. वहाँ पे हम लोग waste of space कर देते हैं. Yes, हम लोग लिखते थे int x, हम लोग पास कर देते x and वहाँ पे हम लोग variable n में copy करते थे x में जो भी value था and we were doing computations on that variable n. But in call by reference मैं क्या कर रहा हूँ? x का ही address पास कर रहा हूँ and in definition I will be using pointer variable so that I could able to access x and y using that pointer variable. Directly मैं x and y में ही changes करूंगा. यहाँ पे देखो वहाँ पे हम लोग स्वैपिंग में फर्स्ट केस में हम लोग स्वैपिंग में क्या कर देते हैं? हम लोग जो फंक्शन था वहां पे ही प्रिंट कर देते थे, राइट?
यहाँ पे देखो, इन सपोज आई राइट स्वैप फंक्शन, पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा सी, अभी मेरा रिटर्न टाइप वॉइड ही रखना है मुझे। यस, यहाँ पे आई विल टेक टू थिंग्स, पॉइंटर p and pointer q. This is function declaration. Yes, function definition क्या होगा? Swap. Yes, function definition, दो पॉइंटर वेरिएबल, ये पॉइंटर वेरिएबल है। क्या क्या लेता है पॉइंटर वेरिएबल? एड्रेस लेता है। यस, दोनों में I should pass address during function call. Now what I'll do is, let's say I'm calling a swap function for to swap x and y. If here I will pass address of x and address of y. प्रिंट में आ जाओ, यहाँ पे अभी x के अंदर 5 स्टोर्ड है एंड y के अंदर 10 स्टोर्ड है। x का एड्रेस लेट्स से 100, y का एड्रेस लेट्स से 200. Okay, now I'm passing address of x and address of y, means I'm passing 100 and 200 here. From here, this is function call, right? This is function call. Yes, now I'm passing address, so here I am using pointer variables. Yes, तो x का एड्रेस p में स्टोर हो रहा है, y का एड्रेस q में स्टोर हो रहा है। yes, तो p and q are some pointer variables. yes, p में 100 जा रहा है, q में 200 जा रहा है। अभी मैं करूंगा स्वैप यूजिंग दिस पॉइंटर वेरिएबल्स, तो डायरेक्टली वो चेंजेस x एंड y में होना चाहिए। यस, डायरेक्टली वो x एंड y में चेंजेस होना चाहिए। ओके, कैसे करेंगे सर? स्टार पी मतलब क्या? स्टार पी मतलब क्या? यस, स्टार पी मतलब स्टैंडिंग हियर, 100. मैंने बोला था। ऐसे समझो, p मतलब स्टैंडिंग हियर। यस, p प्रिंट करता तो 100 प्रिंट होता है, स्टैंडिंग आउटसाइड, एंड स्टार p मतलब स्टैंडिंग इनसाइड। स्टार p will return 5 and star q मतलब 10. Star q and this is q. Star p is okay. So I will use star p to access x and star q to access q. एक temp variable यहाँ पे भी लगेगा। If आपको without using temp variable आता है तो it's too good. There is a logic behind. इसके बाद बोलूंगा मैं, बट अभी के लिए यू विल यूज temp variable फॉर इजीनेस। ओके, ये मैं इंटीजर ही ले रहा हूँ बिकॉज नो नीड टू टेक एज पॉइंटर। यहाँ पे temp में मैं वैल्यू स्टोर्ड इन x, वहां पे क्या कर रहा था? temp में x स्टोर कर रहा था, बट अभी x को एक्सेस कैसे करूंगा? यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। विच पॉइंटर वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू x? p पॉइंट कर रहा है, और x के अंदर क्या वैल्यू लेना है? तो आई राइट स्टार p मींस स्टैंडिंग इनसाइड 5 रिटर्न करेगा, तो टेम्प में 5 डाला। यस, अभी यस, y इक्वल टू लिखते थे x, ऐसे लिखते थे, बट अभी y को कैसे एक्सेस करूंगा? यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल q, एंड x को कैसे एक्सेस करूंगा? स्टार p. स्टार p. वेरी गुड। नाउ star q is equal to स्टार p equals to स्टार q आएगा। स्टार p इक्वल टू स्टार q आएगा, राइट? yes. yes, Because p is pointing to x and q is pointing to y. Okay, the now star q is equal to p. Star and p. q is equal to equal to q temp. equals Very to good. temp. समझा? तो हमने Yes. स्वैप कर दिया। ये एक्चुअल स्वैप यहाँ पे हो गया, जबकि कॉल बाय वैल्यू में हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे थे। यस,
x and y दो अलग वेरिएबल्स क्रिएट करके हम लोग कर रहे थे इन कॉल बाय वैल्यू. Here we are doing computations on the same variable. Okay, so yes, just I will just return this. Okay, तो ये already मेरे x and y में changes हो गया using this. And one more thing, if you are writing your definition above main function, then no need to declare it. Declare करोगे तो भी चलेगा, but it's optional. Okay, completely optional. So if you are writing your function above main function, ये main function के ऊपर लिखते हो, तो no need to declare it also. Okay, you can directly write the definition and that's it. एक try करके देख लेते हैं. What happened to this? Okay, कुछ print नहीं कर रहे ना हम लोग, swap कर रहे. Now we'll print here. C out. Yes, x. Y. Yes, x में 10 हो गया, y में 5 हो गया. समझा सबको? Call by value and call by reference. Yeah. Yes. If I'm writing function definition before above my main function, then no need to declare it. You can directly write a definition. I hope सबको call by value and call by reference समझा है. Yes. Yes. Okay. So let's start with concept of oops. Okay. अभी तक जिसको जो भी डाउट है you can ask me. पूछ सकते हो. सर इसको ओप से नहीं कर सकते? oops अभी हम लोग पढ़ेंगे. oops से हम लोग बेसिक से जाएंगे क्लास ऑब्जेक्ट हो सब. Okay. So okay, let's switch to oops concepts without wasting. फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब आएगा. फंक्शन ओवरलोडिंग आप विदाउट oops भी कर सकते हो. तो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देख लो. फंक्शन ओवरलोडिंग एक एग्जांपल लेते हैं. विदाउट oops में भी you can use this concept. फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब here वही फंक्शन समझाए सबको, राइट? Suppose I am writing a function to print two things, right? So this is my basic function. Let's say function 1. Function का name दे दिया. It's taking x and printing it just for simplicity. Yes. Yes, it is printing x. void टाइप है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो दिस इज फंक्शन 1. स्वैप हटा दो. ओके, ये भी हटा दो. चलो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पास कर देंगे. तो फंक्शन 1 में वी आर जस्ट पासिंग, कोई भी जो भी वैल्यू पास करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा. यस, 5 पास करता हूँ तो इट विल गेट प्रिंटेड. तो दिस इज माय फंक्शन, बेसिक फंक्शन यूज्ड टू प्रिंट वैल्यू. तो 5 पास किया, 5 प्रिंट हो गया. Suppose I am writing some another function. Yes, function, let's say void function with same with some different, or let's say same function. Okay, yeah. And here I am passing two things, or let's say 5, and मुझे एक character भी print करना है. Let's say I'm passing alphabet A. Okay. So here, यहाँ पे क्या लेना चाहिए मैं? 2 variables. Yes. And yeah, okay. Second one is character. So I use char, and it's stored in y. Okay. So I will be writing cout 2 times x.
1. Will it work? Okay. So ये function overloading बोलते हैं. किसी function name is same, उसका return type same है. In first case, I am just passing integer. In second case, I am overloading the function. Means I am just adding the new things. So if same function name से सिर्फ मैं 5 pass करूँगा, see function name is same. You can see, okay. And second case में I am passing a integer as well as character. So this is nothing but what I did is I just overloaded the function 1. So this is basic concept of function overloading. हम लोग इसमें deep में जाएंगे in oops concept. जब oops पढ़ेंगे तब deep में इसमें जाएंगे कि actually क्यों यूज होता है. अभी आपको नहीं समझेगा. अभी आपको लगेगा what are you doing sir? मतलब सेम ही तो चीज है. function 1 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है. yes, but function name सेम है, return type सेम है. ये constraints है. yes, I hope it's clear. Function, yes, overloading. Yes, okay. So there are two things. Return type same होना चाहिए. And yes, one more thing. If आप यहाँ पे and sequence matters, okay? Sequence matters. यहाँ पे if int x है और यहाँ पे मैं कोई character ले रहा हूँ, तो that is not function variable. Function overloading, sorry. It's not function overloading. तो ये भी matter करता है sequence of arguments you are taking, types of sequence of argument, okay? उसका types, it matters. Okay, let's start with OOPS का concept. What do you know about OOPS? You know, class, object. लोग तो पहले मैं बता देता हूँ कि OOPS क्यों are use करे. मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोला था कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फंक्शन ओरिएंटेड. हमने अभी जस्ट फंक्शन पढ़ा. फंक्शन ओरिएंटेड. यू नो ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, पता है डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल्स एक्सेस्ड बाय ऑल फंक्शंस. सर ग्लोबल वेरिएबल हिडन होता है, उसको निकालने में स्कोप रेजोल्यूशन आप करता है. सम लेट्स से मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन बनाया, स्वैपिंग के लिए कोई फंक्शन है. तो सी माय मेन फंक्शन, इफ आप देखोगे ना इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, माय फंक्शन, माय एंटायर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जब यहाँ पे ओके, तो हम लोग क्यों जा रहे हैं ओप्स के कंसेप्ट पे, दैट ओनली आई विल गोइंग टू टेल यू. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द why it is called function oriented and what are the advantages. Okay, तो यहाँ पे when we have, if we have global variable, जैसे आपने बोला कि it is accessible to all the functions, right? If I'm declaring the int a and b as a global variable, तो कोई भी function access करता है, कोई भी function ये दो variable को access कर पाएगा. Agree? Yes. And it is difficult to trace which function is accessing what variables at a time. Okay, so this is the basic disadvantage. This my data is not secure. In simple way, my data is not secure. कोई भी function मेरे variable को change कर सकता है, मेरे data को change कर सकता है. So that's why we jump on OOPS का concept. That is in C++ we have object oriented features. Okay. So in C++, again, my entire program will be divided into, we call objects. Okay. अभी कैसे होता है? तो object is nothing but what we did object. Okay. Before going to object, let's it's defined class. आपको सबको structure पता होगा. What is structure? User defined data type. क्यों use करते हैं structure? Let me give an idea. हम बोलते हैं अच्छा पता है कि नहीं स्ट्रक्चर? हाँ ना, स्ट्रक्चर हाँ ना. तो उसका रोल नहीं पता है, हम पता है. स्ट्रक्चर कैसा होता है कि स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. सपोज अभी हमने देखा कि इफ आई वांट टू स्टोर रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, आई यूज इंटीजर एरे.
if I want to store marks of a student, again integer array. If I want to store grade of but if I want to store the whole detail, सब पूरा students का detail, मुझे एक student का एक variable बनाना है, तो I use structure. I create data type, जैसे int, float, char होता है और मतलब ऑलरेडी डिफाइंड डेटा टाइप्स है, वैसे मैं मेरा एक डेटा टाइप क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा एंड वैल्यू स्टोर करूंगा इन दैट वेरिएबल. तो आई एम स्ट्रक्ट स्टूडेंट ऐसे कीवर्ड होता है. तो स्ट्रक्चर में मैं खुद का एक डेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर व्हाट इज स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर का सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है. स्ट्रक्ट लेट्स से स्टूडेंट, स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट. यस, int roll number. Yes, then string name of student. Yes, let's say I have int marks of student. Okay, so suppose I want to store these three things for particular student. So it is not good if I use integer array to separately store roll numbers of all the students, separately a string का array or character array or whatever, marks के लिए एक array separately. So instead of doing that, we will declare and use a variable. Student का भी एक variable use करूँगा s1, and using that variable I can fetch the data of a particular student. Okay, तो इसमें क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें उसका रोल नंबर भी स्टोर्ड है, नेम भी स्टोर्ड है, यस, एंड मार्क्स भी स्टोर्ड है. एंड साइज ऑफ दिस वेरिएबल, जैसे int का साइज 2 बाइट होता है, वैसे साइज ऑफ दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल इज 2 प्लस. सपोज साइज यहाँ पे कैरेक्टर एरे का साइज दिया 10, 2 + 10 + 2, दैट इज 14 बाइट. Size of one structure variable is 14 byte. So this is the basic concept of structure. So class is nothing but extension of structure. Okay. So yeah, okay. यहाँ पे देखो, suppose मैं बोलता हूँ class of student, class of student. तो क्लास पे सिर्फ मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ. ओके, क्लास में सिर्फ मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ कि स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, क्या क्या चीज मुझे चाहिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट लेट्स से. ओके, तो दैट इज क्लास. बट इफ आई क्रिएट अ वेरिएबल, वी कॉल इट एज इंस्टेंस ऑफ क्लास, देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ओके, तो इफ कोई एक स्टूडेंट s1 है, so this is object of this class student. Student का data stored in this variable s1. ऐसे समझो. Yes. Then okay, let's take an example and understand. मैंने यहाँ पे लिखा class student. जैसे स्ट्रक्चर में कर रहे थे सेम वे में. यस, स्ट्रक्चर में कर रहे थे सेम वे में. इंट रोल नंबर, यस, स्ट्रिंग नेम, दो ही चीज रखते हैं अभी के लिए. तो दिस इज क्लास स्टूडेंट. इसके लिए कुछ मेमोरी असाइन नहीं होता है, ये जस्ट ब्लूप्रिंट है. वी कैन कॉल ब्लूप्रिंट. And I will, when I create a variable of type student, it is called object. Yes. And okay, let's say मैं main function के अंदर if I मुझे कोई student का data store करना है, okay, int main जो भी है, main function के अंदर if I want to create a variable of type student of class student, it is called object. Okay, let's say okay, इसका type क्या है, जैसे हम लोग int के लिए int लिखते हैं, वैसे इसका टाइप है स्टूडेंट. सो आई विल राइट स्टूडेंट. यस, एंड ऑब्जेक्ट का नेम, जो भी वेरिएबल का नेम देना है, लेट्स से s1. ओके, लेट्स से s1 इज अ स्टूडेंट. तो ये एक स्टूडेंट का वेरिएबल बन गया और वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट.
एंड इसमें नेम और रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टोर हो रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट स्टोर हो रहा है, जो भी नेम है, that's Urvesh, and roll number is 22. So I am not separately storing the roll number and name. I am just storing it in one variable. That's why we use the concept of structure. And structure class is nothing but extension of structure. तो ये मैंने class and object का एक preview दिया reference to structure. If आपको structure पता होगा तो ये बहुत easy होगा आपके लिए to understand. Okay. तो why we are going to oops का concept, जैसे मैंने बोला कि in C programming data मैंने global रखा है, तो it is not secured. Any function can access my data at any time, right? Any function can access my data at any time. But in oops, we just bind data and functions together. अभी C programming में structure में सिर्फ data होता था कि हम लोग सिर्फ डेटा स्टोर कर पाते थे, लाइक रोल नंबर, मार्क्स, स्ट्रिंग, व्हाटएवर, बट फंक्शंस नहीं होता था. तो वी विल बाइंड डेटा यस, अभी पढ़ा मैंने चैट. आई डोंट नो किसके लिए आपने डेटा आंसर दिया है, विराज. एनकैप्सुलेशन, यस यस. सो देयर आर टू मेन फीचर्स इन oops. Yes, oops. There are two. Oops stand for object-oriented programming. Object-oriented programming. Yes, there are two main features of oops. Why we switch to oops? तो उसके दो main reason है, दो main features है oops के. One is data binding. That is encapsulation. And second one is a data hiding. That is security. To keep my data secure, private, I use OOP का concept and data binding. अभी यहाँ पे देखो. In case of C programming language, my data and functions were separately stored and functions were using data. Yes, but in oops ka concept, we are storing data and object together. Okay, suppose this is object one of let's say student का हमने जैसे class बनाया था. This is object of class student. तो यहाँ पे data, that is roll number and उसका नेम था जो भी, string. Yes, string, let's say name जो भी है, name दे देते हैं variable. Okay, so this is data, and if I want to access those data, I will have function inside the object. Okay, to let's say print करना है. So this is my function to print the data. यहाँ पे cout जो भी है. So basically what I am trying to tell you is my functions and data are binded together in a single unit called object, and that is called data binding, called encapsulation. Yes, my data and functions are binded together in a single unit called object. Yes, and this data, if I can secure this data using some access specifier. You might be knowing that is private access specifier. If I use that specifiers in this object, I can secure my data. Means function outside my object can't use those variables. So I can achieve data hiding or privacy and security in oops, object oriented programming. इतना समझा? इसमें किसी को डाउट? What is okay? What is data binding, encapsulation, oops क्यों यूज कर रहे हैं? इतना समझा? इसमें किसी मतलब कुछ डाउट? Any doubt, anyone?
यस, एक एग्जांपल ले लेते हैं, देन विल स्टॉप द लेक्चर. फटाक से एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. ओके, हाउ, व्हाट एंड व्हाई वी आर यूजिंग क्लास. क्लास इज अ कीवर्ड. ओके, जैसे हम बोला स्टूडेंट क्लास बनाते हैं. ओके, स्टूडेंट इज माय क्लास. ओके, क्या स्टोर करना है? रोल नंबर नेम करते हैं. डोंट फॉरगेट टू राइट सेमीकोलन एट द एंड. क्लास इज अ ब्लूप्रिंट. यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू नहीं दे रहा हूँ. और एंड नो मेमोरी इज गेटिंग अलोकेटेड फॉर दिस कोड. This is just a blueprint. Okay, no memory is getting allocated for this code. Okay, next is string. Okay, string use करना है तो I need to include header file. Yes, string. This is name. Now I'll create the variable for this class. Yes, and we call that variable as object. That is instance of class in OOPS concept. Okay, तो I will create a variable. जैसे int का variable create करते हैं, वैसे student का एक variable create कर रहा हूँ. In simple words. Yes, this is a variable I have created. इसको हम लोग object बोलते हैं. Now I'm putting the value inside this variable. Yes, right now I'll use access specifier as public. जब हम लोग पढ़ेंगे this encapsulation and data hiding concept, तब हम लोग private access specifier will come. You will come to know tomorrow what is access specifier. For time being, keep it as public. Okay, if I want to store student data, so dot operator is used to access the members of class. These are data members. And let's say एक function भी ले लेते हैं. Let's say void function is to print something on screen. That is data जो भी student का data है, that I will going to print. तो see, let's say cout. It's printing roll number. It's printing name. This is function member and this is data members. Okay, member function भी बोल सकते हैं इसको. Okay, the function member function of a class student and these are data members of a class student. So I am just storing the value. और dot operator is used बोला मैंने जैसे कि dot operator is used to access data members. So for student S1 मैं उसका roll number store करना है, so I will do it like this. Let's say 12 is the roll number of student S1 and name जो भी कुछ input डालते हैं. Yes, suppose now I do access the ये मैंने data member को access करके store कर दिया. Now if I want to access this member function, I will call the member function using this variable, that is object. Yes, pf. I'm just calling this. Let's see what happens. It's taking too long. Still it's not working or what? इस पे भी देख लेते हैं. What happened? कुछ मिस कर रहे हैं क्या? क्या मिस कर रहे हैं?
The private section. Yes. सर S1 डॉट pf आएगा ना उधर? सर int roll number में नंबर का ओ n बड़ा है. Yes. अच्छा, O is capital here. It should be small. अभी क्या प्रॉब्लम है? Again, somewhere we are using capital O. Yes. Yes. This is what I'm creating an object. I'm just, in simple word, I'm creating a variable of type student. That is instance of class. Class is a blueprint. Yes. An object S1 is an instance of this class. This is a basic introduction of OOPS. Today, tomorrow we will going to go deep inside OOPS ka concept. We'll see different features. Today we saw two features of OOPS. Just to introduce OOPS ka concept, that is data hiding, data binding. क्या क्यों यूज कर रहे हैं OOPS, and we saw class and object. Any doubt? Anyone? If you have no doubt, we can stop the lecture.